Hello students, in this lecture we will discuss about anaerobic respiration, inlets of oxygen in plants, differences between aerobic and anaerobic respiration, and also differences between respiration and photosynthesis. So here anaerobic respiration, the respiration in which oxygen is not required is known as anaerobic respiration. तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एनएरोबिक रिस्पिरेशन एक ऐसा रिस्पिरेशन है जिसमें कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. द रिस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड मीन्स इट टेक्स प्लेस इन द absence of oxygen. Number 2, incomplete breakdown of glucose takes place. So anaerobic respiration is the respiration in which oxygen is not required and it includes incomplete breakdown of glucose. In plants, when anaerobic respiration takes place, means here glucose breaks down to form pyruvic acid, in cytoplasm during glycolysis, and it forms alcohol, means ethyl alcohol, and carbon dioxide, and only 2 ATP energy. So here you can write C6H12O6 gives C3H4O3, means it is pyruvic acid, and after the breakdown of C3H4O3 it forms C2H5OH plus CO2 plus 2 ATP एनर्जी. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और फिर पायरुविक एसिड इथाइल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म करता है और only 2 ATP energy is produced in this process. Now, so it is the equation, it is the reaction which takes place in plants and in yeast during anaerobic respiration. So here we can see that 2 ATP energy is formed, which is very less. So plants need very less amount of energy and also the heat energy, and therefore in yeast cell only 2 ATP energy forms. In yeast cell, which is used in the bakery industries, it is also known as alcoholic fermentation. Alcoholic fermentation is the process in which ethyl alcohol, carbon dioxide form during the process of anaerobic respiration, and here only 2 ATP energy is formed. It takes place in yeast and in some bacteria, and it is mostly used to produce alcohol and therefore it is known as alcoholic fermentation.
इन एनिमल, तो हियर आपको ये समझ लेना है कि जब प्लांट्स में एनाएरोबिक रिस्पिरेशन होता है तो उसमें ग्लूकोज सबसे पहले पायरुविक एसिड में, और ये पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन होता है जिसमें इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ATP एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। जब ये एनाएरोबिक रिस्पिरेशन प्लांट सेल्स में मोस्टली यीस्ट्स में होता है, यीस्ट जो कि एक फंगस है, तो इसको हम लोग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहेंगे, क्योंकि इस प्रोसेस के द्वारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल बनाए जाते हैं, अल्कोहलिक बिवरेजेस को बनाया जाता है। तो इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहलिक बिवरेजेस। So different types of alcoholic beverages are formed during alcoholic fermentation in the yeast and some bacteria, and therefore it is known as alcoholic fermentation. When anaerobic respiration takes place in animals, during anaerobic respiration, again glucose breaks down to form pyruvic acid, which again breaks down to form lactic acid, and only 2 ATP energy. Here lactic acid, which is formed during the anaerobic respiration in animals, due to accumulation of lactic acid, there is some crampness take place in the muscular tissue, and it can be cured by massaging or hot water bath. So lactic acid if accumulates then it causes some pain. तो आपको याद रखना है कि ग्लूकोज जब पायरुविक एसिड में ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बनता है और फिर ये पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड और 2 ATP का फॉर्मेशन करता है। तो लैक्टिक एसिड here C6H12O6 gives C3H4O3 means pyruvic acid, and finally it breaks down to form C2 C6H5 C6H5 C6H5O COOH plus 2 ATP energy. So here it is lactic acid. तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन जब होगा और साथ में 2 ATP एनर्जी रिलीज होंगे तो हम लोग कहेंगे कि ये मस्कुलर सेल्स में होता है। तो हियर अगेन partial breakdown of glucose takes place to form lactic acid, 2 molecules of lactic acid and also 2 ATP energy. So here again energy form is very less, but in animal cells, in muscle cells, you can say in animal muscles, this process takes place when the animals need more energy and this energy is not provided by aerobic respiration. So to require this extra amount of energy, the muscular cells of animals perform anaerobic respiration as well as aerobic respiration so that
In aerobic respiration, 38 ATP energy, and in anaerobic respiration, 2 ATP energy form. And in this way, more energy form which is required by the muscular cells of animal during severe exercises, aerobic exercises or physical work. So, anaerobic respiration takes place in animals only when they require more amount of energy. Otherwise, animal cells perform aerobic respiration only. So here glucose converts into pyruvic acid, and again it is converted into lactic acid, and 2 ATP energy is released during this process. Here glucose gets converted into pyruvic acid, and again here breakdown of pyruvic acid takes place in 3 ways. Number 1, CO2 plus H2O plus 38 ATP energy forms when it takes place in mitochondria. And here in the presence of oxygen it takes place. So pyruvic acid gets converted into CO2, H2O and 38 ATP energy when it takes place in mitochondria and in the presence of oxygen. It means it is aerobic respiration. तो एरोबिक रिस्पिरेशन के दौरान हम लोगों को याद रखना होगा कि जब पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो यहाँ पे CO2, H2O और 38 ATP एनर्जी का फॉर्मेशन होता है. इन मसल सेल्स in absence of oxygen, मसल सेल में क्या होगा, तो ये लैक्टिक एसिड को फॉर्म करेगा. इट फॉर्म्स लैक्टिक एसिड and 2 ATP energy. Here carbon dioxide does not form. In the third condition, in yeasts, again in absence of oxygen, it forms ethyl alcohol plus CO2 plus 2 ATP energy. So in this way, glucose during the process of glycolysis in cytoplasm, it takes place in cytoplasm. During the process of glycolysis. So during the process of glycolysis in cytoplasm, ग्लूकोज पहले तो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर ये पायरुविक एसिड 3 तरह से इसका ब्रेकडाउन होगा. अगर हम लोग बात करते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन की, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि CO2 और H2O का फॉर्मेशन होने के साथ साथ 38 ATP एनर्जी फॉर्म होता है. मसल सेल्स में देखेंगे तो ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है और यहाँ पे लैक्टिक एसिड और 2 ATP एनर्जी का फॉर्मेशन होता है. और अगर हम लोग देखेंगे कि यीस्ट सेल में, तो ये भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है और यहाँ पे भी इथाइल अल्कोहल CO2
और 2 ATP एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो ये रिस्पिरेशन 3 तरह से हो सकते हैं। ये दोनों फर्स्ट एरोबिक रिस्पिरेशन है और सेकेंड और थर्ड ये दोनों को हम लोग कहेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनाएरोबिक रिस्पिरेशन। मीन्स एनाएरोबिक रिस्पिरेशन इन मसल सेल्स एंड एनाएरोबिक रिस्पिरेशन इन यीस्ट। तो जब यीस्ट में ये एनाएरोबिक रिस्पिरेशन होगा तो इसी को हम लोग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कहते हैं। तो ये 3 तरह से ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं कि O2 प्लांट्स में कैसे लिया जाता है। O2 इनटेक इन प्लांट्स। तो O2 को प्लांट कैसे लेता है, तो इसके लिए आपको याद रखना है, नंबर 1, there are three inlets in plants for taking oxygen. Number 1 is stomata. ये स्टोमाटा क्या है? तो स्टोमाटा आर द टीनी पोर्स present on the surfaces of leaves, mostly on the lower surface. तो लोअर सरफेस ऑफ लीव्स पे स्टोमाटा होते हैं जो कि टीनी पोर्स हैं, और ये क्या करता है? इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग रिस्पिरेशन एज वेल एज इन फोटोसिंथेसिस। So stomata are the tiny pores present on the surfaces of leaves, mostly on the lower surface, and helps in gaseous exchange during respiration. They helps in gaseous exchange. Help in gaseous exchange during respiration. मीन्स ये क्या करता है कि ऑक्सीजन को अंदर लेता है और CO2 को बाहर छोड़ता है। तो ऑक्सीजन इज टेकन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। यू कैन से ऑक्सीजन इज टेकिंग इन एंड CO2 इज गिवन आउट। नंबर 2, lenticels. These are also known as lenticels. So lenticels or lenticles, these are the pores present on the older pores located on older stem or bark of trees. तो bark of trees या फिर older stems पे ये लोकेट होता है। So here lenticels are the pores located on older stem of bark or trees. So it also helps in gaseous exchange. So here exchange of gases. It again helps in intaking oxygen and giving out carbon dioxide. Intaking oxygen
and giving out CO2. So CO2 is given out and oxygen is taking in. So in this way, stomata क्या होता है, ये टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेसेस ऑफ लीव्स, मोस्टली ऑन द लोअर सरफेस ऑफ डाइकॉट लीव्स. ये ऑक्सीजन को अंदर की तरफ लेता है और CO2 को बाहर की तरफ छोड़ता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन. दूसरा होता है लेंटिसेल्स. लेंटिसेल्स मीन्स पोर्स लोकेटेड ऑन ओल्डर स्टेम और ऑन द बार्क ऑफ ट्रीज. So they also help in exchange of gases. They intake oxygen and giving out carbon dioxide. And third one, which is known as number 3 is number 3 here, surface of roots, or you can say root surfaces. Surface of root. So surface of roots also help in gaseous exchange by diffusion. Gaseous exchange by diffusion. So diffusion is the process in which transfer of molecules take place from their higher concentration level to their lower concentration level. So here, during the process of diffusion, oxygen, which is in higher concentration in the atmosphere, so oxygen is taken from atmosphere here. Air present in the soil. Air present in the soil. So soil has air, and from this air oxygen is taken, and CO2 is given out from the root cells, to the soil. So here diffusion takes place, and diffusion helps in taking oxygen from air present in the soil, and it also help in giving out CO2 to the soil. So in this way, these are the three ways in which oxygen is taken by the plant cells and carbon dioxide is given out. As you know, in the plants, respiratory system is absent. That's why different parts of the plant take oxygen and give out carbon dioxide individually. Means in roots, surfaces of root help in exchange of gases. In the old stem or the trees, bark of trees, lenticels are present which help in exchange of gases, and in the leaves, and also the green parts of the stem, means newly formed stem, or you can say young stem, which are green in color, contains stomata also, and they help in gaseous exchange. So stomata helps in gaseous exchange in the green part of the plants, mostly in the leaves. Lenticels help in exchange of gases in bark of trees. Means here bark is the dead part of the plant or trees. So it does not respire, but
below the bark, living cells are present, and these living cells require oxygen. So, lenticels which are present on the bark of trees help in providing oxygen to the living cells present below the bark, and in this way they also take oxygen and give out carbon dioxide through the lenticels. And in this way, these are the three structures: stomata, lenticels, and surface of root help in gaseous exchange so that respiration can take place in plant cells properly, because they have no respiratory system or breathing system. तो एनिमल्स में क्या होता है कि ऑक्सीजन को लिया जाता है, जैसे मान लीजिए ह्यूमन बीइंग में हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, लंग्स तक पहुंचाते हैं, और लंग्स से ब्लड के थ्रू ये पूरे बॉडी पार्ट्स के सेल्स में, टिश्यूज़ में पहुंचा दिए जाते हैं रिस्पिरेशन के लिए। लेकिन प्लांट्स में इस तरह का कोई सिस्टम नहीं होता, और इसी की वजह से लीव्स, स्टेम, रूट्स, फ्रूट्स सभी पार्ट्स अलग अलग ढंग से डिफ्यूज़न के हेल्प से ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनलेट्स प्रेजेंट इन द प्लांट्स विच हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और याद रखना है कि जिस भी ऑर्गेनिज्म में एनाएरोबिक रिस्पिरेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं एनएरोब्स। इट मीन्स एनाएरोब्स आर द ऑर्गेनिजम्स which perform anaerobic respiration. So, here organisms which perform anaerobic respiration. Examples are, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, यीस्ट, सम बैक्टीरिया, फंगस, फंगी, एटसेट्रा। तो ये सभी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एनाएरोबिक रिस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं, और इसी की वजह से इनको हम लोग कहेंगे एनाएरोब्स। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट anaerobic respiration and aerobic respiration, differences between them, and also respiration and photosynthesis differences. So thank you, students.